Good evening, everyone, and welcome to another session of Option Wednesdays. आज का वेबिनार ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर है और खास तरह की बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर. Usually, when we talk about options, especially intraday option trading, we only talk about whether you're buying a call or buying a put, or maximum when it comes to the expiry day, you'll be selling options, right? So what about intraday strategies? This is a subject which is interesting, and because you have various strategies, and you also have the advantage of lowering your costs and also probably going with a hedge strategy. तो आज के ये वेबिनार में हम ये देखेंगे कि इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में क्या क्या डेटा पॉइंट्स और पैरामीटर्स आपको देखना पड़ेगा और इससे आपको ट्रेडिंग में कैसा फायदा होगा. Okay, so let's start the presentation. Can I have the presentation, please? Can I have the presentation, please? Right. So इंट्राडे नीड्स फास्ट रिफ्लेक्सेस. इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब भी आप इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे तो आपका टाइम फ्रेम जो है टू डिसाइड अ ट्रेड इज वेरी स्मॉल. Usually, after you pick up a trade, the trade may last for 20 minutes or even a couple of hours. But however, to do the research, जब आप रिसर्च करोगे कोई ट्रेड के ऊपर कि कौन सा ट्रेड लूं, तो वो जो टाइम फ्रेम है आपका बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऑप्शन का प्राइसेस जो है वो डायनामिक होता है. तो इसीलिए वो चेंज भी इतना डायनामिक हिसाब से होता है, और शायद आपको राइट प्राइस अगर नहीं मिला तो लॉस भी हो सकता है. So what are the parameters that you take into consideration, or the most important factors? One is, how is the option behavior? अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा होगा, और अगर वॉलेटिलिटी कम है तो ऑप्शन का प्रीमियम उतना कम होगा. और अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन का बिहेवियर कुछ अलग हो सकता है. सो द टाइम टू एक्सपायरी मैटर्स. How far away is your expiry when you trade an option? So the volatility makes a huge difference, especially on the premiums, and also the way the option moves. Again, whether you're trading an ATM option or an out of the money option also makes a difference. Then you come to market analysis. Market analysis क्या होता है? मार्केट आज कैसा खुला है? पॉजिटिव खुला है, नेगेटिव खुला है, ट्रेंडिंग है मार्केट या फ्लैट है? These are the market analysis that you will be doing and once the market is open or before you take a trade. Usually, if let's say Bank Nifty opens 500 points gap up, then how are you going to trade the market? First thing is to see whether it is sustaining. What are the stocks which are hitting days high, right? कौन सा स्टॉक्स बैंक निफ्टी में डेज हाई मार रहा है, और अगर पॉजिटिव खुला है कौन सा बैंक निफ्टी का कंपोनेंट या एचडीएफसी बैंक या एक्सिस कौन सा स्टॉक ऊपर है, उसके हिसाब से आप ट्रेड या बैंक निफ्टी का मोमेंटम गेज कर सकते हो. देन व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट यूज? अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट लगता है तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड बाय अ कॉल, और अगर नेगेटिव मार्केट और नेगेटिव ट्रेंडिंग है तो आप सीधा जाके पुट ऑप्शन भी ले सकते हो. So simple strategies will involve, when you are very confident about the direction of the market, right? Then you just buy a call or buy a put. That is the most simplest strategy that you will take into, take a trade on. But however, what happens if you are indecisive? अगर आपको व्यू नहीं मालूम पड़ सकता या गेज नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? So some of these parameters is what we will see ahead in this presentation.
देन रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप ट्रेड लिए हो और अगर स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करोगे तो आपका रिस्क उतना बढ़ता है. For some people, when you buy a 100 rupees option and you keep a stop loss of 80, that is good enough. But some with a bigger risk appetite, they might even keep a stop loss of 50, because for them, that is their kind of risk appetite. And based on this, each one's psychology is different. Each one's trading style is different. And risk management also plays a huge part in that. And of course, when we talk about risk management, stop loss bahut zaruri hai. Most of the people that trade in options never keep a stop loss, and which is why, after the option you have bought or something goes down by 50%, then you are in panic mode, right? सो स्टॉप लॉस जैसे हम कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे हम स्टॉप लॉस उधर भी लगाते हैं, ऑप्शंस में भी बहुत जरूरी है. एंड फाइनली, वंस यू गेज ऑल दीज पैरामीटर्स, ये ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है तो आसान हो जाता है, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू नीड. एंड ये सब करने के लिए आपका टाइम फ्रेम जो है वो बहुत छोटा होता है, बिकॉज these parameters, the time that you have before you take a trade, especially when it comes to intraday trading, you have to do all of your analysis at a faster rate, right? So asking the right question, market kya lagta hai? What does this usually mean? Market kya lagta hai meaning whether it's a trending market, agar market ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, या नेगेटिव बायस है, या फ्लैट है. That is what it means saying market kya lagta hai. Usually when everyone asks this question, you generally tend to give a view. And once the direction is established, 50% of your work is done. अगर आप डायरेक्शन सही तरीके से पकड़ सकते हो तो आपका 50% काम जो है वो खत्म हो जाता है. एंड बाकी जो है स्ट्राइक सिलेक्शन थोड़ा गलत भी अगर होता है तो फिर भी you can still be in profit even if you take a wrong strike, once you get the direction right? So strike selection क्यों important है? अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो या ऑप्शन राइटर हो तो आपका एटीएम ऑप्शंस तो नहीं लिखोगे आप. सो बेसिकली यू गो beyond a certain point when it comes to writing of options, especially let's say Bank Nifty is trading at 42,600 or 700. You're not going to write the 42,500 options, or maybe even 42,900 options. You'll probably write the 43,500 and probably the 42,000 put options, because your risk factor when it comes to writing of options goes that much higher. जो रिस्क इन्वॉल्व है ऑप्शंस में, ऑप्शन राइटिंग में, वो इतना ज्यादा है, क्योंकि आपका लॉस जो है अनलिमिटेड भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन राइटिंग, right? So but when it comes to buying of options, especially when you're trading intraday and you're trading weekly options, you'll ideally buy the at the money options or slightly out of the money, because you want to capture the whole ride. And suppose the market does not move in your direction, even though let's say you got the direction right, that it's going it's a trending market and it's going long, but let's say you buy an out of the money option which is 500 points away, and if the market does not move more than 100 points, the chances of you making money on that option becomes that much more lesser, right? So choosing or a strike price or strike selection is very, very important. फिर आते हैं what are the data points that you look at. आप कौन से डेटा पॉइंट्स देखोगे? ये बेसिकली ओपन इंटरेस्ट रहेगा और पीसीआर रहेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम you look at these two parameters, because if you dig deeper into any more analysis, then what happens is the time is against you. When you're trading options, especially when you're a buyer of options, you're trading against time. So for the analysis also, you'll have that much lesser time. So it is important that you do your analysis at a
take your time, do the analysis right, even though it takes 5, 10, 15 minutes, and then get into a good trade, right? And what stop loss to use? क्या स्टॉप लॉस रखना है आपका हर ट्रेड में, ये इंपॉर्टेंट है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है हर ट्रेड के लिए, ये आपको जाना ज़रूरी है। अगर आप 100 रुपये का ऑप्शन खरीद रहे हो तो शायद अगर आप क्विक इन क्विक आउट जैसा ट्रेडिंग कर रहे हो तो शायद 80 रुपये का स्टॉप लॉस रखना बेहतर होगा। अगर आप पूरा दिन के लिए खेल रहे हो और थोड़ा लॉन्ग रेंज के लिए खेल रहे हो तो शायद स्टॉप लॉस 50 रुपये भी हो सकता है। सो स्टॉप लॉस इज इम्पॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर that you always keep a stop loss when you take a trade, irrespective of whether you're buying or selling off options, or even if you're doing a strategy as such. Okay. So moving on, what are the key variables that you look at when you're trading options or you're getting into a strategy? Okay, when you talk about intraday dynamics of Bank Nifty, ये क्या होता है? Intraday dynamics is Bank Nifty आज कैसा खुला है, और अगर पॉजिटिव खुला है कि नेगेटिव खुला है, और अगर पॉजिटिव खुला है तो ये सस्टेन हो रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर सस्टेन हो रहा है तो एडिशनल बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है, एंड एडिशनल बाइंग कौन से बैंक निफ्टी के स्टॉक में आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट यू लुक एट व्हेन यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी? फॉर एग्जांपल, there's no point in looking at Bank of Baroda or a Can Bank when you're trading Bank Nifty, because their weight on the index as such is not so high that that can move the bank index itself, right? So intraday dynamics of Bank Nifty is how you gauge that. What are the stocks which are hitting days high? Broader market, how are the mid caps faring? How's Nifty faring? Is Nifty down 100 points, and is Bank Nifty struggling to hold on to the positive side? And in Bank Nifty, which are the stocks which are positive, which are negative? Tick flow मतलब कौन सा stocks डे हाई मार रहा है, कौन सा डे लो मार रहा है, और अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव ओपन होने के बाद अगर फिर भी ट्रेंड हो रहा है हायर, तो ये सब टिक फ्लो और डेटा के हिसाब से देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओआई कॉन्सेंट्रेशन एंड पीसीआर डायनामिक्स। ओआई कॉन्सेंट्रेशन में आप ये देख सकते हो कि रेजिस्टेंस कहाँ आ सकता है इंट्राडे में, और यूजुअली आप तो जब ये वीकली ऑप्शन ट्रेड करोगे तो वीकली ऑप्शन में यूजुअली क्या होता है, 1000 पॉइंट का रेंज में ओआई कॉन्सेंट्रेशन होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ओआई कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसे हो रहा है, whether there is addition in puts or whether there is addition in calls or whether there is a reduction. These are the things or the dynamics that you will have to keep in mind and keep a close watch on when you're trading Bank Nifty. So PCR Dynamics again, whether there's more interest in the put sellers, or is there more interest in the call sellers, or are they unwinding positions or adding positions? So these are OI concentration and PCR Dynamics, which you have to monitor probably every 10-15 minutes if you have a trade, right? Because the moment the hands change between buyers and sellers or unwinding of positions, the direction of the market also changes. This is how they usually work, right? But scanning constituents of heavyweights, HDFC Bank, SBI, ICICI और Axis Bank जो है, ये सब heavyweights है। अगर HDFC और SBI डे हाई मार रहा है तो शायद बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है अगर फ्लैट खुला है, और अगर HDFC और एक्सिस जो नेगेटिव खुला है और रिकवरी नहीं हो रहा है तो शायद बैंक निफ्टी फ्लैट रह सकता है पूरा दिन, राइट? सो these are the parameters, variables that you have to continuously monitor on a day in day out basis for you to be in the market, and especially when you're trading
intraday. Moving on, as we were speaking about what are the constituents of बैंक निफ्टी, जैसे आप देख सकते हो HDFC का वेट मैक्सिमम है, उसके बाद ICICI, SBI और फाइनली एक्सिस, SBI. ये सब ये चीज ये दिखाता है कि these are the heavyweights which can make a difference in बैंक निफ्टी when you trade in them, right? अगर ये 4 स्टॉक मूवमेंट ज्यादा है तो डायरेक्शन शायद उसी डायरेक्शन में जाएगा बैंक निफ्टी. अगर ये 3 स्टॉक या 4 स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा. अगर फ्लैट है तो शायद बैंक निफ्टी का रेंज बहुत छोटा होगा, 100 या 200 पॉइंट का रेंज में दिन के लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. जस्ट कीप दीज 4 स्टॉक्स, ये 4 स्टॉक आपका स्क्रीन पे लगा के रखो और ये 4 स्टॉक को मॉनिटर करो और इनका बिहेवियर देखो. और बेसिकली जब ये स्टॉक्स ट्रेंड करेंगे तो बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में जा सकता है, राइट? So coming back to the most important parameters, open interest and PCR liquidity, right? And liquidity. So एक तो है मैक्सिमम इंटरेस्ट लोगों को वीकली ऑप्शंस में है. जैसे आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट लेवल अक्रॉस एक्सपायरीज वीकली में मैक्सिमम में 80% ऑफ द ट्रेडिंग जो होता है इंडेक्स में या बैंक निफ्टी इंडेक्स में, ये वीकली ऑप्शंस में होता है. मंथली में सिर्फ 15% और फार डेटेड ऑप्शन में सिर्फ 5%. सो द एक्टिविटी इज हाई इन वीकली ऑप्शंस एंड so the option pricing will be more dynamic when it comes to weekly options. Of course, there are other parameters which also aid to the dynamic of the pricing of options, because when you look at monthly options you have more time, so you have more theta in the option, whereas when you come to a weekly option you have the count is much more lesser, and as the days to expire comes closer, you tend to lose the option value also starts losing. So yes, when it comes to intraday, weekly options is definitely the way to go to. So this graph tells you all about it. So PCR, how do you gauge the dynamics of PCR? पुट कॉल रेशियो में क्या होता है, अगर पुट्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब उधर निफ्टी या बैंक निफ्टी का सपोर्ट बना रहता है, तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है अगर पुट साइड में है तो मार्केट शायद उसके नीचे नहीं जाएगा अगर उधर एडिशन हो रहा है कंटिन्यूस. और अगर कॉल्स में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ट्रेंड विल बी पॉजिटिव, बिकॉज the call writers are seeing that the market is moving higher and they would probably make a loss, and that is why they will wind up their call positions and probably shift to a higher call, right? So this is another tool that you can use when you trade options, and especially these are parameters which give you a dynamic sense of the market as to what market participants are doing at this given point in time. अगर आपको पता चला कि मार्केट में लोग पुट साइड या कॉल साइड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग उतना बेहतर रहेगा और आपका ट्रेड जो रहेगा प्रॉफिटेबल होने या राइट डायरेक्शन के हिसाब से ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है. सो PCR again on the bearish side, if the people tend to unwind the positions in the put side, that means the trend of the market would probably change direction, and or even it need not go down completely, but it may come down on an intraday basis probably 100 or 150 points, but that will still affect your option prices when you're doing
when you're buying or selling options of the ATM strikes. So PCR Dynamics is very important. This will give you a real-time analysis. You can do real-time analysis of markets, and this will help you. Let's say you take a wrong trade, and or you take a trade and suddenly the direction changes. This will give you one probably a step up, which will show that the direction of the market or the view of the participants of the markets are changing in a dynamic way, and then you can reverse your position, right? So please keep this in mind. This is very important, and the same thing goes for open interest, where again your market participants are basically showing where the interest is, whether on the call side or on the put side, or whether they are buyers or whether they are sellers. So अगर ये चार्ट देखोगे तो कॉल ऑप्शंस में मैक्सिमम हुआ है कंपेयर टू पुट ऑप्शंस, राइट? सो लेकिन एडिशन भी उतना ज्यादा है कॉल्स में, which basically signifies that the trend of the market, even though it may be positive, may not be much from now on, or it may not go up further ahead. So then what you do, that if you are in profit, then you basically square off your options, or let's say if you are not even in profit, you could probably minimize your loss based on this data, saying that there is more addition happening on the call side, since there is a huge change in the OI, and you should get out of the trade. So it is not only important that you take a trade, but it is important कि आप ट्रेड से अगर गलत ट्रेड निकल गया तो उधर से आप कितना जल्दी निकल सकते हो ट्रेड से, उतना ज़्यादा आपको फायदेमंद भी हो सकता है। क्योंकि देखो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं दिन में, राइट? या you can always come back tomorrow and have another go at it. So इंट्राडे ऑप्शंस में आपको अगर डेटा आपके अगेंस्ट जा रहा है तो इमीडिएट आपको ट्रेड चेंज करना पड़ेगा, या आप वो ट्रेड से बाहर निकलना होगा। ये क्या होता है कि लॉन्ग रन में when you have 21 days of trading, when you are more disciplined and when you can get out of the trades at a faster rate, then the chance of you being in profitable at the end of 21 days is going to be higher. अगर आप एक ही ट्रेड पकड़ के रखोगे, इवन दो वो ट्रेड गलत जा रहा है, तो आपका लॉस उतना बढ़ेगा हर दिन, राइट? या अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कर रहे हो, वो भी नेगेटिव है। तो इसीलिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, और जब भी डेटा पलटता है आपका ट्रेड भी उतना ही फास्ट पलटना चाहिए, या आप वो ट्रेड को बंद करना चाहिए। So what are the most common strategies? So once you decide the direction of the market, right, then you choose the strike price. अगर आप HDFC बैंक, जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर HDFC, ICICI और SBI पॉजिटिव खुला है और उसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो बेसिकली आप सीधा जाके कॉल ऑप्शन ले सकते हो, राइट? बिकॉज इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आप ऑप्शन राइटर हो और आपको यूजली ऑप्शन राइटिंग में क्या होता है कि लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग रहना चाहिए। तो दूसरा स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है कि वही कॉल पुट ऑप्शन को जो स्ट्राइक प्राइस है 43,000 का, उसको आप बेच भी सकते हो। यूजली व्हाट वी डू इज वी डू नॉट एडवाइज इन सेलिंग at the money options because the risk is that much more higher. So what you could probably do is, if the market is at 42,900 or 43,000, you could probably write the 42,500 or 600 put option. Yes, the premiums कम हो सकते हैं, लेकिन chances are that you could probably make money, और loss होने का chance थोड़ा कम रहेगा as you go out of the money.
for out of the money options. Similarly, when you are your view has been that the market is going to go on a lower side, or the trend is going to be lower today, so what you can do is, you see all red on your screen, सब स्टॉक डेलो मार रहा है, तो जाके सीधा जाके पुट ऑप्शन ले सकते हो, राइट? सो इट इज द ऑपोजिट ऑफ, इफ यू आर लॉन्ग, सो ये तो सिंपल है, right? So when your direction is 100% right, not say 100, convinced that you are the direction is right, so then what we would advise is go ahead with taking the vanilla options, that you can buy a call or buy a put, or if you are a option writer, you do the opposite of it. You write the put or write the call on whichever direction the market is trending at. सो दी ओनली थिंग इज, ये सब होने के बाद भी आपको स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, क्योंकि सब होने के बाद भी ट्रेड गलत जा सकता है, या मार्केट पलट सकता है अगर एक खराब न्यूज़ आया, इफ देर इज अ नेगेटिव न्यूज़, और इफ देर इज सम न्यूज़ ऑन एनी ऑफ द बैंक्स. सो टू मिनिमाइज दैट, इट इज एसेंशियल टू कीप अ स्टॉप लॉस, राइट? और आगे अगर आप लेट्स से आपका व्यू जो है ये दिखा रहा है कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, लेकिन आपको ये मालूम है कि आइदर डायरेक्शन में जोर से खींचेगा मार्केट, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप लॉन्ग स्ट्रैडल बाई कर सकते हो, जो कि है बेसिकली कॉल और पुट सेम स्ट्राइक का खरीद लो, लेकिन इसमें क्या है कि द कॉस्ट ऑफ इट विल बी स्लाइटली हायर. सो unless you're very strong with the view that the market is going to move in one direction. For example, if someone is trading um, on a news based day, for example आरबीआई पॉलिसी हो या रिजल्ट का दिन हो, तो उसमें क्या हो सकता है कि मार्केट एक साइड फास्ट भाग सकता है, कौन सा साइड आपको मालूम नहीं है, तो इसमें बेसिकली आप लॉन्ग स्ट्रैडल का इस्तेमाल कर सकते हो. विज़ अगर आपको प्राइसिंग के हिसाब से ज़्यादा है लॉन्ग स्ट्रैडल, तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल भी कर सकते हो, क्योंकि वीकली ऑप्शन में क्या होता है कि सिंस आपके पास थोड़ा टाइम रहता है और मार्केट एक साइड फास्ट खींचता है कभी, तो वो साइड का ऑप्शन का प्रीमियम उतना ज़्यादा और उतना फास्ट बढ़ेगा भी. तो बट इसमें क्या है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं गया और डायरेक्शन में गया भी और उतना दूर तक नहीं गया, तो आपको लॉस भी हो सकता है, राइट? सो उसमें सो बेसिकली you can, what you have here is a strategy for various kinds of dynamics of the Bank Nifty. Suppose you think that the market is going to move in one direction, but you don't know which direction it is, then you go ahead and buy the long straddle. Usually, the kind of strategies that we give is that we usually go to for short strangles. Why? Because हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट किधर है. तो यूजुअली बैंक निफ्टी में क्या होता है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है 1000 पॉइंट का वेरिएशन में होता है. अगर मार्केट 43,000 में है तो मैक्स ओपन इंटरेस्ट पुट में शायद 42,500 में होगा और कॉल में 43,500 में होगा. सो व्हाट वी डू इज, इंट्राडे के हिसाब से 1000 पॉइंट का 500 पॉइंट का रेंज ज़्यादा है. यूजुअली अगर न्यूज़ नहीं है या कुछ इवेंट नहीं है तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी उतना जोर से खींचेगा नहीं, राइट? एंड स्पेशली अगर एचडीएफसी और एक्सिस या एसबीआई इनएक्टिव है तो शायद मार्केट फ्लैट रहता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आउट ऑफ 5 दिन में 3 दिन में शायद बैंक निफ्टी का रेंज, यूजुअली अगर इवेंट नहीं है तो 200 या 300 पॉइंट का रेंज में रहता है. तो हम लोग क्या करते हैं,
कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेच के, सुबह बेच के बाय 2 बजे या 3 बजे हम वो कवर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, यूजली आपको अराउंड 15 से 18 रुपए मिल सकता है। बट again, you have to be very careful about the strikes that you choose, and see that once the position is going against you, let's say for example you sell a call option at 30 rupees and then sell a put option at 30 rupees, your inflow is 60, you have to keep a stop loss of at least 90 rupees when you're trading intraday. Okay, and if you want to take a higher risk, then you keep a stop loss of 120, which is the double of 60, right? So usually what happens is this 60 rupees, by the end of the day, it will come to probably, 43 or 44. And this is usually a straight strategy or slightly on the safer side, because if you know that the range of the market is going to be within this 2 or 300 points. And ये जो strategy है, ये expiry के दिन में बहुत काम आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में क्या होता है कि यूजली मार्केट अगेन रेंज में रहता है, और ऑप्शन वैल्यूज जो है, जो प्रीमियम जो है, क्योंकि थीटा अगेंस्ट है उनका, तो इरोजन ज़्यादा होता है, the premiums erode faster, so you are at a higher advantage of making money, especially during expiry day. So for example, on Wednesdays, which are Bank Nifty expiry days, we usually tend to go ahead with these kind of strategies, which are option writing strategies. And of course, if there is an event or there is a news flow which is going to impact, for example, if there is a Fed event and the market can go either direction, and if and your thought process is that the market can go either direction sharply, then you go ahead and buy the ATM call and put, or even slightly out of the money call and put, and wait for that event to happen to take advantage of the event, right? So these are the strategies that usually we tend to give, and we kind of play around with the premiums when it comes to writing. And of course, whenever we always give a strategy, there is always a stop loss. अगर strategy भी कर रहे हो तो stop loss maintain करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि strategy किया और loss नहीं हो सकता है, right? सो ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है इंट्राडे स्ट्रैटेजीज के लिए? पहले तो मोमेंटम आउटलुक, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किस तरफ मोमेंटम है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड, या नॉन मोमेंटम है, मतलब फ्लैट है मार्केट और शायद फ्लैट ही रहने वाला है पूरा दिन। उसके बाद टेक्निकल आउटलुक, अगर आप चार्ट्स देखते हो तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो या व्यू ले सकते हो टेक्निकल आउटलुक। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जैसे मैंने आपको बोला पहले, HDFC बैंक या जो 4 बैंक्स जो है, जो हैवीवेट्स हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं, राइट? ब्रॉडर मार्केट टिक फ्लो, मतलब हाउ इज द ब्रॉडर मार्केट लुकिंग, वेदर इट इज trending more on the negative side or on the positive side. Most of the sites, you also have these heat maps which show which of the stocks are in green and which of the stocks are in red, so you can gauge how many stocks are actually in the positive territory, how many are on the negative territory, right? So that is something that you can look at a heat map to understand the broader markets, how they are behaving. Derivatives data, which is your open interest and पुट कॉल रेशियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स डेटा है ये डायनामिक है। जब भी मार्केट पलटता है या डायरेक्शन चेंज करता है या फ्लैट होता है, डेरिवेटिव डेटा पहला देखो, क्योंकि उधर से आपको कई चीज़ मालूम पड़ सकता है कि मार्केट का पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं कि अगला मूव क्या है, राइट? And failure levels, mostly exhaustion levels, where
let's say you take a trade and you are positive on the market, but the market does not move as much as you thought. फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी खुला 200 पॉइंट और आपको शायद लगता है कि 500 पॉइंट मूव करेगा बैंक निफ्टी, लेकिन वो शायद 250 पॉइंट मूव करके खत्म किया उसका रैली इंट्राडे के हिसाब से, तो शायद आपका ऑप्शन उतना पैसा नहीं बना, even though you've got the direction right and the strike price, the strikes right, so that chances are you may not make that much money as you thought you might make, right? सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बायर हो तो डेफिनेटली इंट्राडे ऑप्शंस में आप एटीएम और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लो, क्योंकि प्राइस डायनामिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फार आउट ऑफ द मनी आप ऑप्शन लेते हो तो चांसेस आर शायद आप उतना प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, और अगर मार्केट मूव नहीं हुआ तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो सीधा घटेगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी where the maximum interest is and the participants are, you tend to trade in weekly expiry than concentrate on the monthly expiry models, especially when you're doing intraday, because the monthly expiry options will be very highly priced compared to the weekly options. Again, premiums, if you are an option writer, you will look at premiums in a different way compared to a buyer. और एंड फाइनली वॉलेटिलिटी लेवल्स, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो शायद आपको मार्केट का रेंज नहीं पता हो, तो शायद उस दिन आप छोटा ट्रेड लो या क्वांटिटी कम करो अगर ट्रेडिंग करना है. And if the volatility is too high, maybe you don't want to be a writer or a seller of an option because there is an event. And अगर क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में लॉसेस अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, तो हाउएवर अगर आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, स्टॉप लॉस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस, अगेन एज वी डिस्कस्ड, अगर आपको 100 रुपये का ऑप्शन लिया तो अगर ऑप्शन 125 आ जाता है तो इट इज़ बेटर टू स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ योर प्रॉफिट्स एटलीस्ट, राइट? एंड आपका जो टारगेट्स है हमेशा स्पॉट लेवल्स के हिसाब से होना चाहिए. मतलब अगर बैंक निफ्टी 42,500 ट्रेड कर रहा है और आपका टारगेट बैंक निफ्टी में 42,700 है, तो जब भी और आपने ऑप्शन खरीदा तो जब भी 42,700 आता है तो आप ऑप्शन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा. क्योंकि अगर उधर से मार्केट पलटा, क्योंकि आप लेट से टेक्निकल के हिसाब से देख रहे हो तो आप स्पॉट लेवल्स के हिसाब से टारगेट लोगे, तो अगर उधर रेजिस्टेंस है तो उससे ज़्यादा शायद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. और दूसरी बात ये भी है कि आप ऑप्शन कॉन्सेंट्रेशन या राइटर्स किधर है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा. So these are the few things that you have to keep in mind. And of course, when you're trading options, delta and theta, delta again, the range of the options, and theta is always, if you are an option buyer, it is against you because you're running against time when you are trading weekly options. And these are the few things that you have to keep in mind. Once you get a hang of all of this, which are a few parameters, then it becomes a habit. Then you come onto your desk and every day you tend to see these few parameters, and which will help you in trade better and of course be more profitable. तो अगर आप ये 4 या 5 चीज ध्यान में रखोगे और हर दिन ये 4-5 चीज देख के ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर होगा और लॉसेस भी कम हो सकते हैं, राइट? सो रूल्स आई फॉलो. अगर इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे के हिसाब से आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाओ. आई नेवर कैरी अ ट्रेड. If I trade on an intraday basis, I will never carry a trade for to the next day, and which is
because the dynamics of tomorrow will always be different from what it is today, right? And today, when I take a trade, I'm looking at the PCR levels and the open interest and the market tick of what is happening right now on the screen. Tomorrow, what is going to happen, I wouldn't know. So intraday अगर ट्रेड करना है तो इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करो, बुक पार्शियल प्रॉफिट्स एवरी टाइम। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो 50 या 70% अगर आपका ऑप्शन ग्रीन में आता है तो पार्शियल प्रॉफिट करो। एग्जिट एट द अर्लीस्ट व्हेन इन डाउट। अगर मार्केट पलटता है या डेटा जो आप देख रहे हो चेंज हो रहा है, लेट्स से बुलिश से बेरिश की तरफ, या ऑप्शन ओआई कॉन्सेंट्रेशन जो एडिशन हो रहा था वो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहा है, तो अगर ऐसा डाउट है तो एग्जिट आउट ऑफ द ट्रेड, पिक सिंगल्स रादर देन हिट सिक्सर एवरी डे। यूजुअली जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हर बार ऐसा नहीं है कि ऑप्शन डबल होएगा, राइट? सो एवरी टाइम यू कम टू एन ऑप्शन, पीपल थिंक यू बाय एन ऑप्शन एट 50 rupees and it becomes 100, you square off. That never happens every day. It might happen once a week, so you'd probably have 4 trades like that in a month, which will probably double or even triple. But try and get those 50% profitable trades, because that is where you're going to have a sustainable trading pattern as such. Adhere to stop loss. Stop loss, अगर आप बायर हो या सेलर हो, स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखो, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एटलीस्ट आपका कुछ तो प्रॉफिट बचेगा और आपका दूसरा ट्रेड के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हो। एवरी डे इज अ ब्रांड न्यू डे। सो अगर आप आज लॉस किए हो तो ऐसा नहीं कि कल नहीं आ सकते हो, कल और एक नया दिन है, पैरामीटर्स चेंज होंगे, मार्केट डायनामिक्स चेंज होगा। So every day is a brand new day. Every day is a new trading session for you, especially for intraday traders, since you don't carry over the trades. So keep at it. Keep these parameters in mind, and I'm sure you will have much more profitable trades in the coming trading sessions, right? कॉमन मिस्टेक्स, होल्डिंग ऑन टू होप। आप ऑप्शन खरीदे हो और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन आप फिर भी ये ऑप्शन स्क्वायर ऑफ नहीं किया हो एंड यू होल्डिंग ऑन कि शायद मार्केट पलटे और आपका ऑप्शन का प्राइस वापस आए। सी, दैट इज होल्डिंग ऑन टू होप। सो अगर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो प्लीज़ आप ट्रेड से बाहर निकलो, या स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो नया ट्रेड ढूंढो। मार्केट डायनामिक्स चेंज हुआ रहेगा, ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर को और एक बार देखो, मार्केट टिक को देखो, तो these things will take you a long way. Oblivion to theta time decay, which is nothing but the theta factor. Whenever you come closer to the expiry session, the price of the options are always going to reduce as the number of days to expire comes closer, and that is something a lot of people don't take into consideration. And finally, one can go wrong in determining the direction and speed, but always maintain a stop loss. Stop loss हमेशा रखो। इससे आपको ज़्यादा आपका ट्रेडिंग मॉडल जो है या ट्रेडिंग टेक्निक जो है ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। So these are the few things. Please make these as your thumb rule, and I'm sure you'll go a long way. So we come to the end of the presentation. I hope you liked it. I'm open to questions. Please follow us on Telegram. This is our channel where we give all our calls, intraday calls and strategies. So you can follow us on Telegram for all the calls. And also, we also give open interest analysis and PCR analysis every day during market hours, which will also help you gauge the market, and will give you a view of what we are thinking and how the dynamics of the markets are at that given point of time. So you can, make use of all the data that is available on our Telegram channel. Right?
So thank you again. Let's take some questions now. So half profit में कैसे exit करोगे? So let's say you're trading multiple lots. Let's say you have 3 or 4 lots of, and you made 50% of your uh, profit. What you can do is, there are two things. One is you can square off 2 lots and keep 2 lots, or what you can also do is you can shift your stop loss to above your cost, or above 10% above your cost, or 20% above your cost. तो इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी रहेगा। अगर मार्केट डायनामिक्स चेंज हुआ और नीचे भी आता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है आपका बाइंग प्राइस से ऊपर रहेगा, राइट? तो इससे आपको एटलीस्ट 10 या 20% का प्रॉफिट मिल के ही रहेगा, right? So the other thing is, someone has asked about slippages. Yes, when you trade options, there will be, because the dynamics are of options are like that. There will be some amount of slippages, but exactly, and when especially when you're a buyer of option, there will be a slippage. There might be a 1 rupee or 50 paisa slippage when you execute the order, because by the time you do your research, let's say the price is at 80 or something like that, and by the time you finish your research it is at 85. Yes, that can take time, but at least when you get into the trade, the direction is right, and the chance of you having a profitable trade is high, will be higher, even though you lose that 5 rupees, right? So between gauging the direction of the market and taking the trade, there will be some amount of time, and while choosing the option, choosing the strike, so there will be some the option is never going to be at the same price at all given points in time. So the slippage can be at your advantage also. Suppose you see the price as 80 and you get it at 75, that can be your advantage also. So there is both sides of it. So the index can affect other bank stocks also. Yes, because they when you're trading only Bank Nifty, the constituents are only the Bank Nifty stocks. So you need to basically see what the Bank Nifty stocks are doing. Market, you can always look at how the mid caps are faring, or even how Nifty is faring, because if the all the other sector is going down, Bank Nifty may not move up as much as it could have if everything else was also positive or everything else was flat, right? So that is the other aspect of it. The overall market view is also something that you will have to look at. स्टॉप लॉस कितना एडिक्वेट है? सो बेसिकली स्टॉप लॉस आपके रिस्क के हिसाब से रहेगा. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ट्रेड, अगर आप 100 रुपये का ऑप्शन लेते हो और आप शायद 20 या 25 रुपये का प्रॉफिट में बाहर आना चाहते हो, तो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, तो इट हैज टू बी 1:1, विच मीन्स अगर 100 रुपये का ऑप्शन है तो 80 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 120 या 125.
लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में खेल रहे हो और आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो शायद और आप पूरा दिन वेट करने के लिए रेडी हो और मार्केट या एचडीएफसी और ये 4 बैंक ट्रेंडिंग में है, तो शायद आप इवन ₹50 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। और अगर आप राइटर हो या इफ यू आर सेलिंग ऑफ ऑप्शंस, देन व्हाटएवर द प्रीमियम इज, सपोज आप ऑप्शन ₹30 में लिख रहे हो एंड यू शॉर्ट एन ऑप्शन एट ₹30, the stop loss should be 60, which is double of the price that you're gaining, right? So these are few things that you have to keep in mind. But as I said, being disciplined, following these parameters, and keeping the stop loss will take you a long way. Okay, so I hope you enjoyed the session. That's it for now. Thank you all.